Hey guys, hi. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चों की जिंदगी? बच्चों कैसे हो आप लोग? अच्छा लग रहा है? सॉरी लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड ही है, लाइव नहीं है, लेकिन मजा भरपूर आएगा, है ना? तो बच्चों, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज हीटिंग इफेक्ट्स, your power concepts and the numericals related to energy and cost. The second part of electricity session is going to happen right now. ठीक है? So that's what we're going to do in the next 30 minutes. 30 minutes session उसके ऊपर नहीं है. In total we'll be doing straightforward 7 questions and the 8th question would be the homework for all of you guys as always. उम्मीद है कि मैंने पिछले सेशन इलेक्ट्रिसिटी 1 के सेशन का जो बच्चे ने होमवर्क सबसे पहले दिया तो उसका नाम डाल दिया होगा. आज नहीं डाला है तो माफी, नहीं डाल दिया था मैंने, डाल तो दिया था मैंने, है ना? तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस सेशन वंस अगेन. गिव मी अ क्विक हाई फाई एंड गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले एंड विल स्टार्ट दिस सेशन राइट नाउ. High five, balle balle. Let's go ahead and start. Welcome to all my old students. Welcome to all my new students also. Let's learn together. Now, before I start, just I'll take a moment here once again. Yesterday night on the community page, I posted a motivational quote. ठीक है, with few words in it. So there were few confusions कि सर आप शायद घर से बोल रहे हो कि नहीं, मैं ऑफिस में ही था. ऑफिस में था उस वक्त एंड आई पोस्टेड अ वेरी गुड मोटिवेशनल कोट. आई होप इट मोटिवेटेड यू गाइज अ बिट एंड इट मेड यू स्माइल, इजंट इट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एज आई सेड, it was very much surprising to see that by the morning 6 o'clock or 7 o'clock it already had thousands of likes and it had so many comments saying that कि सर मैं अभी पढ़ रहा हूँ 4 बज चुके, मैं अभी पढ़ रहा हूँ. यार, hats off to you guys. People who were literally are nighting out and studying how much ever you can, learning all the things. I'm just hoping कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हो, कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हो, है ना? जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो. I'm very happy. I'm so proud of all of you guys. Well done to you. All of you guys are working hard. Well done. All of you guys. I'm proud of you. ठीक है? इसी बात पे स्टार्ट करते हैं सेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, उससे पहले दोबारा बता देता हूं. दिस इज द सेकंड सेशन एंड इन द फर्स्ट सेशन वी डिड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस and the questions related to current circuits, that is Ohm's law, series parallel connection and blah blah blah. In today's session, as I said, we'll be completing the topic of heating effect and we'll be going on forward for power circuit concept and energy and cost concepts. ठीक है? तो ये सारी चीजें हम करेंगे आज. चलते हैं सीधा into the session. As always, we'll be starting the session with a very beautiful quote. और आज कोई motivational quote नहीं है. I just want all of you guys to let me know the answer of this particular simple picture. Question is, which step have you reached today? I'm not asking कि 2 महीने पहले कहां थे या तो 1 महीने बाद कहां पहुंचना चाहते हो. मैं पूछता हूं कि आज कहां पे हो. Where are you today? In which step? Do let me know the answer for this question, not in the chat. You can let me know the chat also, but obviously since it's a recorded video, I'll not be able to see it. What I want all of you guys to is to let me know the answer for this in the comment section once the session is done. ठीक है? Promise? Do that as well. ठीक है? तो I won't do it. Are you at this stage? Or you are at I can't do it? Or I want to do it? How do I do it? I try to do it. I can do it. I will do it. And the moment the state of the mind is कि मैं करूंगा, every time I say that I can and I will, ये जो बात है, जब ये बात आपके दिमाग में आती है तभी आपका जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा yes I did it. आप देख सकते हो, I can do it, I will do it are next to each other. First you should stop doubting yourself कि you or can you not. Once you believe in yourself कि you can, then you take a step forward and say I am gonna do it right now, I will do it right now. Cool? Okay, with that, let's start the session. Here's the first question. Let's start with a very simple question here so that the momentum is carried away and everyone can give me the answer on the chat. उसके बाद धीरे धीरे will one step increase the difficulty. Today we have a very good kind of questions, very important CBSE 10 boards. All of these questions are CBSE 10 board questions and very good difficulty levels are there today. So let's go forward. ठीक है? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने 1 मार्क्स का क्वेश्चन है. You can do this in the examination in 1 or 2 minutes, but here we'll take 1 minute because this is Sprintex. If the current passing through a heater is halved, then the heat produced by it becomes 4h, 2h, h by 2, h by 4. ये आंसर देने का मौका मैं आप लोगों को देता हूं. I'm pretty sure कि इलेक्ट्रिसिटी में ये तो काफी इजी क्वेश्चन है. So go ahead and let me know what is the answer in 10 seconds right now on the chat. Let's go. दे रहे हो? Okay, so it's A, B, C or D, guys. What do you guys think? It's A, it's B, it's C, it's D. What is it? Is it 4h, 2h, h by 2, h by 4? I hope your time's ending in 3,
2, 1, and everyone has answered. Obviously, let me see what is the correct answer here. Correct. So the standard formula for heating effect, or according to Joule's law of heating, is H is equal to I square RT. This is the formula which I will be applying in the original scenario. But now they say that the heater wire is halved. आपका मतलब the current passing through the heater wire is half. Current हो गया अभी आधा. तो that means the new current, let's say I dash, is equal to इस current का आधा, I by 2. Right? It's current का आधा हो गया. So what will be the new heat energy? The new heating effect or heat energy would be I by 2, that is I dash, that is I by 2 का whole square R into T. Correct? Heating material is the same, so resistance will remain the same. The temperature is remain the same. The time taken by the current passing through, it's also same, so T is also constant. So now you have H dash is equal to how much? I square upon 4 RT. So what just happened? Your H dash is basically equal to 1 by 4 I square RT, which is nothing but H. So what happened? Your new heating effect is now H by 4. Heating effect is now H by 4. Now you all must be thinking, कुछ के दिमाग में तो क्वेश्चन आ रहा होगा, sir, if the current passing through a heater is halved, doesn't that mean resistance must have been increased? तो यहाँ पे resistance भी बदलनी चाहिए ना, होना चाहिए सर? नहीं बच्चों, because I'm pretty sure you understand that I can modify the current without changing the resistance also. I will change the voltage. नहीं सोचा था ना? अरे पता है. Okay, this was question number 1. That was a very simple question. I'm pretty sure all of you guys can download the PDF. You all know, you just have to go to Vedantu's app and download the PDF. You can find the link in the description or in the comment section, first comment. ठीक है? नहीं मिल रहा तो बता देना, हम डाल देंगे. Moving to question number 2. H by 4 is the correct answer, by the way. Moving to question number 2, and a very, very interesting and a very solid question. One of the confusing kinds which come in the examination. One of the confusing kinds. मतलब इस question को देख के बहुत बच्चों को मम्मी पापा याद आते. Question is, 2 conducting wires of same material. बताओ. There are 2 conducting wires. Conducting wire number 1, conducting wire number 2. They have the same material. What does that mean? Why do they have to specify it's the same material? That would mean कि दोनों भाई चलो मान लेते हैं दोनों कॉपर के हैं. ठीक है? दोनों कॉपर है. सेम मटेरियल बोलने का रीजन ये है कि they both have the same resistivity. This is what they want to specify. That's why they say घुमा फिरा के material. Now, of equal length be same. मतलब they are twins. Length be same. Now area, equal diameters also. That means area is also named. So now they are identical twins. Sabash. अब क्या है? They are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference. ठीक है? पहले इन दोनों को कनेक्ट किया था हमने सीरीज में, वायर 1 को और वायर 2 को. अब इन दोनों को हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, वायर 1 और वायर 2. 1 2. अब क्या पूछ रहे हो? Across the same potential difference. इस बात को ध्यान दे that the potential difference here is same. Why is that part important? I'll let you know in a moment. Find the ratio of the heat produced in the series and parallel combination. I need to find out what is the heat produced. So let's just say the heat produced in the case of series connection is HS and the heat produced in the case of parallel connection is HP. So what I need to find is the ratio of heat produced in series upon heat produced in parallel. Is that what I have to find? Correct. Now the question is, will I be using the formula of heating effect as I square RT or I'll be using the formula of heating effect as V square upon RT? Which formula will I be using here? That is a confusion. Isn't it? That is a confusion. And that is the exact reason what I told you. Please remember this particular statement. In a lot of videos of mine, I have already told you so many times कि बच्चों जब भी ये confusion हो कि इनमें से कौन सा formula use करना है, you can apply any formula basically. You can apply any formula. But the point here is, using one of the formulas will make the calculations easier. Using the other formula will make the calculations kind of lengthier. तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है? दोनों इस्तेमाल करोगे तब भी सेम आंसर आएगा, ये बात समझ लो आप. लेकिन इस प्रॉब्लम में कौन सा फॉर्मूला समझे कि अप्लाई करनी है. It's very interesting. It's a very simple logic. Whenever in the question it is stated that the potential difference is same, everyone who have been following my videos from really long time, you know, if the potential difference is given same in the question, then please apply the formula of V square upon RT.
if it's given and if it is a hint given to you in the question that the current in the circuit is steady or constant, apply the first formula H is equal to I square RT. यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम बोला है तो भाई बल्ले बल्ले we'll be utilizing the V square upon RT. ठीक है, चलो आप लगाते हैं V square upon R into T divided by V square upon R into T. अब दिक्कत यह है, this resistance here, see voltage is same, so VV same, again cancel out V square. Time also same, cancel out. But the resistance is not same, no? Because when they are connected in series, this is the HS, that is the heating effect in series. So resistance also about series. This is heating effect of parallel. So this is also be heating effect of parallel. So the only thing which this heating effect depends upon is RP upon RS. RP जाएगा ऊपर और RS आ जाएगा नीचे ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो RP upon RS. तो अभी क्या फाइंड करना है हमें? We just need to find what is RP and RS. मिल जाएगा रिलेशनशिप HS और HP का भी, है ना? चलो अब निकालते हैं what is RS. Let's assume that these two wires have equal resistivity, have equal length and have equal area as specified in the question. That means their resistances are also same. RR मान लेते हैं, है ना? If they have the same resistivity, same length, same area, by identical twins से हैं तो इनका रेजिस्टेंस भी सेम ही होगा, है कि नहीं? तो ये भी रेजिस्टेंस RR हो गया. सीरीज में when they are connected, their total resistance would be 2R. R plus R, 2R. If they're connected in parallel, their total resistance would be R by 2. डाउट है? R by 2 नहीं आएगा, करके देख लो. 1 by R plus 1 by R, 2 by R, रेसिप्रोकेट R by 2. आगे ना, रेसिप्रोकेट क्यों किया? क्योंकि दिस इज इक्वल टू 1 by RP. RP चाहिए, 1 by RP नहीं, है ना? सो R by 2 मिल गया आपको आंसर. अब डालो यहां पे RP is equal to R by 2 and RS is equal to 2R. क्या हो गया भाई? RR कट गया, आंसर आ गया 1 by 4. नाउ व्हाट डू यू नोटिस? यू नोटिस अगर मैं यहां से अप्लाई करूंगा, यू विल हैव द आइडिया दैट HS by HP is equal to 1 by 4. That is 1:4. 1:4 is the answer. काफी इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी. इफ आई जस्ट रिवाइज इट क्विकली कि क्या किया हमने, सबसे पहले कंफ्यूजन क्या आएगी कि विच फॉर्मूला आई नीड टू यूज. Got the answer from the question itself. One more hint given in the question is कि resistance of both the wires are same because they have the same resistivity, length, area. Papa, mummy, सब same होंगे, correct? So identical twins, correct? So now once they're connected in series, once they're connected in parallel, I need to find out the ratio of their heating effect. डालो फॉर्मूला, कट जाएगा V और T, बचा RS और RP. RS और RP बच्चों की तरह निकल गया, kg स्टैंडर्ड में निकल गया. डालो, आंसर आ गया 1:4. A super easy question, but a very interesting one. This I would call it as a conceptual question. कि कॉन्सेप्ट लगे आपके यहाँ पे ये पता करने में कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक है? तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2 गाइस, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, क्वेश्चन नंबर 3. आई होप कि सबको यहां तक मजा आ रहा है और भी मजे करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कहां गया? 1:4 है ना? 1:4. नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग लगता होगा ना कि अभिषेक सर बीच बीच में पागल हो जाते हैं, लगता होगा ना? मुझे भी लगता है. क्वेश्चन नंबर 3. A torch bulb. This is again a 3 marks question. Again you can do it in 3 to 5 minutes in examination. 5 मिनट तक का बैंडविड्थ है, उससे ज्यादा मत लेना. उससे ज्यादा लोगे तो छोड़ ही देना क्वेश्चन, ठीक है? यहां पे स्पीड में करेंगे 2 मिनट में. A torch bulb is rated 2.5 volts and 750 milliampere. टॉर्च बल्ब का वोल्टेज given to you 2.5 volt. It's in proper SI unit. Current is given to you 750 milliampere. 750 na? हाँ, that's in milliampere converted into amperes. That would be 0.75 amperes. Millimeter to meter divide by 1000. वैसे ही milliampere to ampere divide by 1000. 0.75 amperes. First I need to find its power. बहुत ही easy question. First I need to find what is its power. Power is equal to voltage into current. Voltage is 2.5. Current is 0.75. So that's basically 75 into 25. करो बच्चों 75 into 25 जल्दी से. हमारा मैथमेटिक्स काफी वीक है तो आप ही लोगों को आंसर बताना है मेरे को. हम तो भाई बच्चे हैं इस मामले में. 5 5 25, 2 कैरी 7 35, 37 0 10 1 15 टा 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 1875. लेकिन लगेगा भाई 3 डेसिमल तो 1.875 एम्पियर. सो एम्पियर्स नहीं, वॉट्स.
1.875 watts. Now the second part, the energy consumed if this bulb is lighted for 4 hours. यार मतलब क्वेश्चन काफी इजी नहीं हो रहा है इसमें. सेकेंड पार्ट इज वी नीड टू फाइंड द एनर्जी. एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना. पावर कितना है भाई 1.875. टाइम कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4 घंटे ना, 4 hours. करेक्ट. डू आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू सेकंड्स? आई डोंट नीड टू. I can give the answer of energy in terms of watt hours. I would suggest you guys to give the answer in kilowatt hours. That would even better. या तो kilowatt hours में आंसर दो या तो joules में आंसर दो. ठीक है. So there are two ways. You can either give the answer in joules or kilowatt hours. If you need to give the answer in joules, then convert this hour into seconds. That is 4 into 3600 कर देना. अगर आपको किलोवाट आवर में आंसर देना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करके फिर किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि नाउ दिस इज इन वॉट्स एंड दिस इज इन आवर्स. Once I get the answer, I'll convert into kilowatt hours. तो 4 into 1.875, बाप रे काफी लंबा लग रहा है, करके देखते हैं. 5 4s are 20, 2 carry. 7 4s are 28, 30, 3 carry. 8 4s are 32, 35, 3 carry. 4 1s are 4, 3, 7. तो 7.500 watt hour is what I get the answer. 7.5 watt hours. Converting that into kilowatt hours, I have to getting E is equal to 7.5 into 10 power minus 3 kilowatt hours. I can do that. I would suggest always to give the answer in kilowatt hour or in terms of joules. Watt hour पे मत छोड़ो, अच्छा नहीं लगता. ठीक है? Okay, I got the answer here. Third question was easier than the second part. This was no concept based. This was memory based. ठीक है? पहला क्वेश्चन जो आपका था वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था. सेकंड क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट बेस्ड था क्योंकि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो. यहां पे आप कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर रहे हो, यू आर जस्ट पुटिंग द फॉर्मुलाज. दैट्स मेमोरी बेस्ड, कि आपको फॉर्मुला याद है वो कर रहे हो आप. सिंपल. ठीक है. सो वी आर डूइंग ऑल द काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड, मेमोरी बेस्ड, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल सब कर रहे हैं, चिंता नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. आई थिंक दिस इज अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड मेमोरी बेस्ड. देखते हैं एक बार. ठीक है, इसके 2 पार्ट है ना. चलो बताता हूं कैसे. चलो मैं बताता हूं कि ये इसमें मेमोरी और कॉन्सेप्ट कैसे दोनों मिक्सड है. पहला पार्ट पढ़ो. An electric bulb is rated at 60 watt, 240 volt. Calculate its resistance. This is a memory based question. You need to apply the formula, find out the resistance. चलो निकालते हैं पहले. ठीक है. An electric bulb is rated at 60 watt, 240 volt. Calculate its resistance. यानी कि बल्ब का दिया हुआ है आपको पावर 60 watts, है ना. पावर दिया आपको बल्ब का 60 watts, sorted. और आपको दिया हुआ है वोल्टेज 240 वोल्ट, 240 volts. Correct. Now you need to find out what? Now you need to find out what is the resistance. According to the formula of power, we have P is equal to V square upon R. निकालना है आपको R, so R would be equal to V square upon P. क्या है भाई V square? V square है आपका 240, 240 का स्क्वायर, so 240 into 240 divided by what is the power? Power is 60. तो 0 0 कट गया, 6 1s are 6 4s are. So basically 4 4s are 16, 1 carry, 4 2s are 8, 960 ohms. वाह, 960 ओम्स आ गया आपको रेजिस्टेंस. ठीक है. तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हुआ. अब आगे देखो बात क्या है. तो इस पार्ट के लिए आपको मिल गया 1 मार्क, इसके लिए आपको मिल गया 1 मार्क. अब नेक्स्ट, इफ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट फ्रॉम 240 वोल्ट, नाउ द वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट, नाउ द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट. कम हो गया वोल्टेज. तो कैलकुलेट द पावर कंज्यूम एंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब. अगर ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तब नया पावर निकालो और करंट भी फाइंड करो. That's what the question says. Now here is where you apply the concept that okay, if I need to find out the power, my power's formula is P is equal to V square upon R. I cannot use I square R here because neither I know the current, so I cannot use it, and neither I know the power. But if I use V square upon R formula, V I know it's given 192. The new voltage is 192. R, what will I do? Here is where you apply the concept that since the material is still, since the device is still electrical bulb, तो electrical bulb का resistance तो बदलेगा नहीं अगर voltage बदलेगा तो. Can it happen? No. The resistance remains the same. So that's when you understand that the resistance which you found out is the resistance which you have to use here. That is the concept. Resistance नहीं बदल रहा है. So the new power would be, let me call it as P dash. It would be 192 का square, that is 192 into 192 divided by resistance is 960. घटेगा क्या? 192 समटाइम्स आता है ये, बताओ, मेरे को नहीं पता. नहीं पता. मेरे को लग रहा है कि 9 से कटेगा, पता नहीं क्यों. 9 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा ना. 3 से कट के देखते चलो.
ये 3 से कटेगा 10 12, हाँ कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 3 जा 3 2 जा 0, 3 6 जा 3 4 जा, ये कैसे कटेगा? 2 से कटेगा। ओके 3 1 जा 3 6 जा, ओके 160, 3 3 जा 3 2 जा, ये 8 से कटेगा ना। 8 से कटेगा ये, तो 8 2 जा 0 और ये 8 4 जा, ये कटेगा। 4 1 जा 4 5 जा, पहले ही बोल देते बच्चों 192 5 जा 968 है, बताते तो हो नहीं, बैठे रहो तो ऐसे। सो द न्यू P dash value would be P dash is equal to 192 by 5. Okay, let's divide that also. So 5 1s are 5 3s are 15, 42 left, 5 8s are 40, 2 left, 5 4s are 20. 38.4 watts is the new power. Correct, 38.4 watts is the new power. Okay, so यहाँ पे दो options में 38.4 है, ठीक है। Now we need to find out the current. That's again easy. We can use either the Ohm's law or we can apply the power formula. या तो आप Ohm's law apply करो, V is equal to IR, या तो आप निकाल दो power से P is equal to VI, ठीक है। So if I apply P is equal to VI, P is equal to VI, I need to find current which is equal to P upon V. P is कितना निकाल दिया? 38.4, 38.4 divide by 192, करो डिवाइड करो, कितना आ रहा है आंसर? मैं नहीं कर रहा इसको, आपको करना है। Okay, let's do it. So 38.4 divided 192 से काट के देखते हैं। 38.4 से कटेगा क्या 192 डायरेक्टली? पता नहीं। So 2 19s are 38 डॉट 2s are, ठीक है। अरे कट जाता, लग तो रहा है। 38.4 से 192 5 टाइम्स करके देखते हैं, चलो लग रहा है मेरे वैसे 5 टाइम्स, 4 टाइम्स करके देखते हैं। 38.4 इंटू 4, नहीं कटेगा, कुछ तो होगा, ठीक है। सो 2 9s are 18 अगेन, 2 6 are 12, देन अगेन 2 से कटेगा, 2 9s are 18, 2 6 are 12, 2 4s are 8, 2 8s are 16, इधर भी 4.8 आएगा, हाँ तो इट्स बेसिकली 960, हाँ 0.4 आ रहा है आंसर यार। ऑप्शन बी शुड बी इक्वल टू 0.4 एम्पियर्स, है ना? एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। 0.2 मेरे ख्याल से 0.2 आएगा, हाँ 0.2, 38.4 डिवाइड बाई 192 इज 0.4, 0.2 बिकॉज 192 टाइम्स 384 होता है। मल्टीप्लिकेशन मैथ्स बहुत वीक है बच्चों मेरी। 192 2 टाइम्स होता है 384, तो सिंस एक पॉइंट है तो 0.2 हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। सो 38.4 आई इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर्स। यार मेरे को लगता है कि मेरे को ना मैथ्स पढ़ना पड़ेगा अगेन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए मेरे लिए। Okay, so let's come back. I hope all you guys enjoyed that particular part also. Question number 4 था वो। तो after this question we'll take a break. इस क्वेश्चन के बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी कितने 20 मिनट हो गया ना, तो इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद एक ब्रेक लेते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है ये, 5वें क्वेश्चन पे हम इसके बाद एक ब्रेक लेंगे, फिर और 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर टाटा बाय बाय, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू गेट विद रेस्पेक्ट टू द डिफिकल्टी लेवल। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, बट दिस इज नो वे डिफिकल्ट एट ऑल. It's one of the most easiest question today, and this question is: an electric iron of 1 kilowatt is operated at 220 volt. ठीक है, there is an electric iron जो भाई पावर उसका है 1 किलोवाट का पावर है उसके पास, and that is operated with a voltage of 220 volt. Sorted. Now they're asking find which of the following fuses that respectively rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere and 5 ampere can be used in it. इनमें से मैं कौन सा फ्यूज यूज करूंगा for this particular electrical iron? सबसे पहले, I know you know the answer, but I want you guys to understand a bit more deeper understanding here. That is, what do you mean by that? कि fuses that are respectively rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere. इसका क्या मतलब? Rated का मतलब क्या होता है? The meaning of rated is simple. If in a very general sense is max. Rated means max. मतलब through this fuses maximum 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere or 5 ampere current will be flowing. If any current above this flows, it will be fused. Now, you have the power and the voltage of the electrical iron. You find out the current through it. And if the current is greater than the fuse values, then you cannot use that fuse. Because the electrical iron will be consuming more current and your fuse is of less value. Your fuse will melt and short circuit could happen. Isn't it? So that's the reason why we need to find out current here. Let's find out the current. So I is equal to P by V. That is straightforward formula. P is equal to 1000 watts
1 किलो वाट है, 1000 कर देते हो, डिवाइड बाय 220, 0 कट गया, 2 11 250 50 by 11 is somewhere about 4.55, correct, 4.55 amperes, correct. So if it is 4.55 amperes is the current, so I definitely cannot use 1 ampere fuse, because maximum current through that fuse is 1 ampere. I cannot use 2 ampere, I cannot use 3 ampere, I have to use 5 ampere. I have to use the 5 ampere fuse. Now what if they also would have given you 10 ampere fuse भी यहाँ पे, तो क्या आप 10 ampere choose करते? Give me a quick yes or no guys in the chat right now. Would you be using the 10 ampere fuse here if in case they would have given in the answer? क्या आप ये लिखते, since the current is 4.55 ampere, I can use a 5 ampere fuse or a 10 ampere fuse? Would you be writing that as the answer? Yes or no? Okay, I'll be giving you guys 3, 2, 1. I really hope that you guys telling me no sir, you cannot. Why? So let's say you're using a 10 ampere fuse. This electric iron needs 4.55 ampere. Suddenly, due to some malfunctioning, this particular electric iron started consuming 6, 7, 8 amperes of current. That might damage the electric iron itself, no? Electrical iron itself, it could damage, get defected, isn't it? So if you're using a 10 ampere fuse, the current will keep on coming until 10 ampere. And then your electrical iron is already स्वर्ग सुधार चुके होते हो, है ना? स्वर्ग सुधार हो चुका है, वो गुजर चुके हैं वो, फिर फ्यूज मेल्ट होके क्या फायदा? That's why I'll be using 5 ampere current rated fuse, so that when the current increases 4.55 से 5 हो गया वो, तब तक चलेगा, उसके ऊपर गया electrical iron would be safe. Got the point? Yes. So I hope all of you guys enjoyed this particular part. All of you guys who joined in between, welcome to the session guys, welcome to the session. I hope all of you guys did not miss most of it, because we already did 5 questions and you can watch the replay later, don't worry about that. We'll be doing 2 more questions right now, one of the very important questions of CBSE 10 after this small break of 1 minute. ठीक है, तो हम 1 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं अभी. We have already crossed 25 minutes of this session, तो 1 मिनट लेना ब्रेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है बच्चों, तो चलो चिल आउट करते हैं, बातें करते हैं. तो क्या लग रहा है, कैसी चल रही जिंदगी? हाँ, तो लेट्स कंटिन्यू टू द पार्ट वेयर वी वर टॉकिंग कि हाँ, कभी कभी लगता है कि अभिषेक सर पागल है. क्या लगता है आपको? यू रियली थिंक सो? रियली? यू रियली थिंक सो? नहीं ना? आई नो यू डोंट थिंक सो. आई नो यू गाइस आर वेरी स्वीट, यू गाइस आर वेरी, यू डोंट थिंक दैट. आई नो. अच्छा, जोक्स अपार्ट, now I'm pretty sure कि you guys might be really tensed and stressed and all. That's why all this jokes and all, because I really want all of you guys to have fun while learning. और कभी टेंशन में लेके मत पढ़ना बच्चों. टेंशन में लेके पढ़ के करी क्या लोगे? मार्क्स तो वैसे भी आनी है, टेंशन से पढ़ो. टेंशन लेके पढ़ो या तो आप हंस के पढ़ो, मार्क्स तो दोनों में आएंगे ही, लेकिन टेंशन लेके पढ़ने में मज़ा नहीं आता ना, हंस के पढ़ना मज़ा आता है कि नहीं? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप स्माइलिंग, बिकॉज एज आई सेड इन yesterday's quote also in the community page, I would just again repeat that ki nothing is more important than your happiness, isn't it? And what matters the most is that you are giving your best. Marks doesn't matter. Nothing else matters. Are you giving your best? That's what matters. अगर नहीं दे रहे हो तो फिर वो दो, बस. ठीक है? तो स्टार्ट करने से पहले मेनी ऑफ यू गाइस आस्क मी अबाउट बहुत बार पूछना है मुझे इन द कमेंट्स इन द कम्युनिटी पेज कि यू गाइस वांट टू जॉइन द माइक्रो कोर्स एंड यू आर नॉट एबल टू. सो गाइस हियर इज द माइक्रो कोर्स लिंक अगेन. आई वुड लाइक टू गिव इट टू गाइस. आई थिंक Vedantu has started something very new कि now you can get 2 micro courses at just ₹11 if in case you want to. If in case you don't know what is a micro course, first of all you should subscribe to the channel right now. Subscribe to the channel because every single day we are coming out with amazing sessions, 6 to 7 sessions we put down every single day. I don't know whether you guys are watching all of them or not. If you guys are watching, do let me know in the comments. But if in case you are watching, we do not only you know that we don't only take sessions, we motivate you guys, we inspire you, we give you tips and tricks, the best out of them, isn't it? So try to be connected as much as possible. Subscribe to the channel right away. I would like the subscriber count to change in our channel right now from something plus 500. ठीक है, 500 बच्चों का सब्सक्रिप्शन अभी होना चाहिए. यू हैव टू डू दैट. ठीक है, इफ इन केस यू हैवंट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइस आर अ पार्ट ऑफ सच अ बिग चेंज हैपनिंग इन द एजुकेशनल वर्ल्ड हियर, इजंट इट? यू गाइस डोंट थिंक सो? थिंक अबाउट इट. आरंट यू मेकिंग अ बिग चेंज इन द वर्ल्ड राइट नाउ इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम? इतने सारे बच्चे यूट्यूब पे आके पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे आके पढ़ रहे हैं. कभी किसी ने सोचा था कि यूट्यूब पे इतनी मतलब पढ़ाई हो सकती है?
Many of the YouTubers are out there giving you a lot of amount of education. We are also trying to do that, right? Let's be a part of the change. So if in case you want to get the micro course, that is nothing but a chapter, complete chapter with all the strategies, quizzes, everything. If you guys want to learn any of the chapters in physics, chemistry, mathematics, biology, SST for 10th standard, you can have 2 micro courses at just ₹11. You just have to go on to this link, vdnt.in/YT micro. Many people told me, sir, this link is not working. That is because, beta, this is case sensitive. vdnt.in is in small, /YT micro is in capital. ठीक है, तो ये केस सेंसिटिव है, तो इसलिए आपका शायद लिंक नहीं खुल रहा होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है. सो गाइस, एंड इफ इन केस यू वांट टू यू अवेल 2 माइक्रो कोर्सेज इन जस्ट ₹11, यू हैव टू अप्लाई दिस कूपन कोड ऑफ FLAT11, ताकि आप भूल ना जाओ. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. ले लिया, ठीक है. तो लेट्स गो फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6. Yes, if I'm not wrong. Okay, now coming to the last kind of questions which you can get in the examination, that is the energy and cost related problem. So we'll be doing 2 questions today, which would give you a very interesting exposure कि मतलब भाई ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन इसमें से, ठीक है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वैसे. You know already how to do this. This is a 3 marks question, can take 3 to 5 minutes in examination. Here will take 2 minutes, ठीक है, not more than 2 minutes. An electric bulb draws a current of 0.8 ampere from 250 volt mains. The bulb is used on an average 8 hours a day. 8 hours a day. ठीक है. इतना पढ़ने के बाद जल्दी निकालो उसका एनर्जी. But make sure that you're taking out the energy in kilowatt hour, not in anything else. So energy is formula is power into time. Power's formula is VI into T. Power का formula VI होता है ना. Voltage दिया हुआ है 250 in SI unit. 0.8 ampere in SI unit. Time is 8 hours per day. So your energy comes out to be कितना? 8 8 16, 16 into 25, 25 into 16 कितना हो गया? 25 into 16 हो जाता है 6 5 30, 3 carry, 6 2 12, 3 15, 0 5 1 5 2 1 2 डा 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 400, है ना? So 400 joules आ गया, 400 watt hours आया, correct? This is the energy per day. This is the energy per day. I'll convert this into kilowatt hour. That would be 0.4 kilowatt hours. This is the energy again per day. I don't want the energy per day. What I want is the energy for 30 days, है ना? हाँ, I want the energy for 30 days so I can get the cost. We have to calculate the monthly bill for 30 days. So what is the total energy for 30 days? Energy for 30 days is equal to 0.4 into 30, है ना? तो 4 into 3. So basically 4 into 3 is how much? 12. 12 kilowatt hours is the answer. This is the energy for 30 days. Cool. Now I need to find the cost. If this is the total energy for 30 days, multiply this with the cost, you will get the answer. The cost per kilowatt hour is 3. So cost is equal to energy for 30 days into money. That's 12 kilowatt hour into 3. The answer is 12 3 is 36 rupees. कुछ गड़बड़ हो गया क्या? An electric bulb draws a current of 0.8 ampere from 250 volts mains. ठीक है. The bulb is used an average of 8 hours a day. 250 into 0.8 into 8. 8 8 16. So 25 into 16. ये गलत तो नहीं है? 25 into 16. Okay, 6 5 30, 3 carry, 6 2 12, 3 15, 0 25, 0 10 1 4. 400 watt hours. करेक्ट तो आ रहा है भाई. 0.4 kilowatt hour. Now 0.4 kilowatt hours for 30 days. 12 kilowatt hour. Cost is equal to 12 kilowatt hour into 3 rupees. 36. 24 36 ना? Options में क्यों नहीं है? I think कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. देखते हैं सोल्यूशन क्या है. 144 rupees है. कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे. 48 किलोवाट आवर कैसे आ गया भाई? If energy cost rupees 3 per kilowatt, calculate the monthly bill for 30 days. है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे बच्चों. देख लेता हूँ मैं यहाँ पे फिलहाल आंसर में क्या दिया हुआ है यहाँ पे. तो हमारा आंसर आ रहा है 36 रुपीज ना. तो यहाँ पे 250 इंटू 0.8 हुआ, किलोवाट आवर में कन्वर्ट हुआ, फिर 8 इंटू 30 हुआ, 240 इंटू 0.2 है 48 नहीं. आई थिंक इट्स 36 रुपीज ओनली.
इफ इन केस अगर आपको कोई और वैल्यू मिलती है, अगर मैंने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो मुझे बता देना कमेंट्स में, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक आपको पता ही है। तो इफ इन केस अगर मैंने कोई मैथमेटिकल मिस्टेक किया तो प्लीज डू लेट मी नो, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट द मैथमेटिकल मिस्टेक राइट नाउ, तो मुझे प्लीज बता देना कि क्या मैथमेटिकल मिस्टेक था। सही तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन फॉरवर्ड फॉर क्वेश्चन नंबर 7, हमारा आखिरी क्वेश्चन आज का। ये आया था 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो इसको करके देखते हैं, कम से कम ये तो सही आ जाए यार, कम ऑन, ये तो सही आना चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन है, ये इससे भी बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगेन लेट्स गो फॉरवर्ड फॉर द सेम सिनेरियो, लेट्स फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एंड देन विल मल्टीप्लाई विद द कॉस्ट। In a household circuit, an electric bulb for 100 watt is used for 10 hours and an electric heater for 1000 watt for 2 hours every day. So now there are two devices, correct? The first device is the electrical bulb. So energy of the electrical bulb is equal to power of the electrical bulb into time of the electrical bulb. Per day कितना है भाई? 100 into 10 hours. So 100 into 10. The answer comes out to be 1000 watt hours. So that would be converted into 1 kilowatt hour, correct? ये हो गया आपका per day energy of the bulb per day. Energy of the heater per day would be 1000 watts into 2 hours every day, correct? So this would be 2000 watt hours. That would give me 2 kilowatt hours as the energy of the heater per day. Now calculate the cost of using the bulb and the heater for 30 days if the cost of the unit of electrical charge is 2 rupees. ठीक है, मतलब इन दोनों का 30 डेज का यूसेज आपको भी फाइंड आउट करना है। तो यहीं से मल्टीप्लाई कर दो। एनर्जी ऑफ द बल्ब फॉर 30 डेज इज इक्वल टू 1 into 30 डेज। कितना हो गया? 30 किलोवाट आवर्स। Now energy of the heater for 30 days is equal to 2 into 30. That would be 60 kilowatt hours. Correct? 60 kilowatt hours. You got it. Now I'll add both of them up. If I add both of them, how much will get? Total energy is equal to addition of these two. That would be 30 plus 60, 90 kilowatt hour. Now total cost is equal to 90 into 2 rupees. That's 180 rupees. 180 तो है? हाँ 180 है भाई। थैंक गॉड। सही आंसर है ना? थैंक गॉड। 180 रुपीज सही है बच्चों, 180 रुपीज सही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आपको आते हैं फॉर एनर्जी। सिंपल है इसलिए नहीं आएगा ऐसे मत सोचना, क्योंकि ये सारे बोर्ड क्वेश्चन से तो आएंगे ही जरूर, ठीक है बच्चों। ओके, तो विद दैट माय डियर स्टूडेंट्स आई एंड टुडे सेशन। और मैं आपको ये दोबारा बताना चाहूंगा कि आज हमने कर लिया हीटिंग इफेक्ट्स, पावर और एनर्जी ऑन कॉस्ट। तो ये सारे के सारे हमने टॉपिक्स कर लिए हैं। जैसा मैंने कहा, द प्रीवियस सेशन वाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी 1 एंड द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट magnetic effects, है ना? So the next session is going to be about magnetic effects. It will be really fun. So I hope you're not gonna miss it out. Here is the homework for today. An electrical iron has rating 750 watts and 220 volt. Calculate the current flowing through it. It's a very easy question, and I would like all of you guys to give me the answer as fast as possible in the comment section, not on the chat. ठीक है? तो इसका screenshot ले लो in 5, 4, 3, 2, 1. बल्ले बल्ले, ठीक है? तो अच्छा, इफ इन केस यू हैव नॉट गॉन थ्रू दी स्प्रिंटेक्स टेस्ट सीरीज, यू शुड, क्योंकि अभी स्प्रिंटेक्स टेस्ट सीरीज एंड होने को आ रहा है। इफ इन केस यू डोंट नो, जनवरी 26 से वी हैव बीन गिविंग यू टेस्ट एवरी सिंगल डे इन द मॉर्निंग 10:30 AM. प्लीज गो इनटू आवर कम्युनिटी पेज एंड गेट दोस टेस्ट। उसके अलावा टेलीग्राम में भी हम पोस्ट करते रहते हैं। तो इफ इन केस यू हैव नॉट पार्ट ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप येट, प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट्स पे। तो टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है। तो जैसा मैंने कहा बच्चों कि पिछला सेशन था इलेक्ट्रिसिटी 1 का, देख लेना वीडियो। इलेक्ट्रिसिटी 2 भी कर लिया हमने आज। लाइट हो चुकी है, ह्यूमन आई हो चुका है, देख लेना, बहुत ही मस्त सेशंस थे। नेक्स्ट सेशन इज गोना हैपन ऑन 13th of February, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि परसों, देख लेना, ठीक है। वो भी 8 बजे आऊंगा, हो सके तो मैं लाइव आऊंगा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि इस वक्त मेरे रेगुलर सेशंस होते हैं इसलिए, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन नेक्स्ट सेशन। भूल मत जाना कि सेशन होने वाला है मैग्नेटिक इफेक्ट्स का नेक्स्ट पार्ट। इफ इन केस यू एंजॉयड दिस वीडियो, हिट दैट लाइक बटन, तहस महस कर दो। मजा तो बहुत आया, आई एम होपिंग, मुझे काफी मजा आया। डू लेट मी नो हाउ वेल यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन इन द कमेंट सेक्शन, और होमवर्क भी बताना, ठीक है। हिट दैट लाइक बटन राइट नाउ। लेट्स क्रॉस 1500 लाइक्स राइट अवे इन द नेक्स्ट 5 seconds. शैल वी डू इट? 5, 4, 3, 2, 1. Everyone who have not put the likes yet, I hope you guys have put it right now, isn't it? If in case you are new, subscribe to the channel right away. ठीक है बच्चों? तो आज फिर दोबारा जाने से पहले बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि बच्चों, as the days are coming closer to the board examinations,
your excitements, your nervousness could convert into fear. Do not let that happen. As I always say, वो जिंदगी ही क्या जिसमें हम एग्जामिनेशन के डर से हार गए, है ना. मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में. बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन. एंजॉय योर लाइफ.